Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. This is lecture number 5, chapter number 5. And the heading of this chapter is Laws of Motion. This is physics subject. This is Chetan sir. And this physics belong to NCERT class 11 physics. So today's concept is all about 5.5 law of conservation of momentum or linear momentum, you can say simply. So this is beta series of physics and my channel's name at the YouTube is फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. 5.5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह लो या लीनियर मोमेंटम कह लो, दोनों एक ही हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टेट द लॉ. ओके, सो स्टेटमेंट इज statement. It states that the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Try to understand my point, my dear kids. What I mean to say through this statement, the momentum of two particles or two bodies will not be created nor be destroyed. Fine. So this is the statement of law of conservation of momentum. ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं. Why we are saying particles? So particles इसलिए बोला जाता है when two bodies are having motion and the distance traveled by the body will be having greater dimension than the diameter of that body, तो तब उस बॉडी को पार्टिकल बोला जाता है. ठीक है, फाइन. So we are talking about isolated system. Isolated system means the interacting bodies, the interacting particles, it should be isolated from the surroundings of air medium so that the motion should not get disturbed by the air medium. Okay, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ दैट सिस्टम. तो चलो दो बॉडीज को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल्स. ओके, वन is body A, another one is body B. Now see here, comparatively, the diameter comparison with the distance traveled by the body A over the surface, which will be having collision with the body B. ठीक है, तो देखो बच्चों, so this is body A and this is body B. Whenever we are saying that there is a momentum inside a body, it means that we are providing force to that body. ठीक है, तो हम उसको हम क्या कर रहे हैं? फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल द डायमीटर ऑफ दिस बॉडी. देखो ये जो डायमीटर है ना, हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी. ठीक है, तो ये देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक, फाइन, this body is traveling. Now you compare the distance of this body with the diameter of this body, so we can call this as a particle A. ठीक है, तो फिर ये particle B. ठीक है, now you can take another arrow mark. I'm using the green color. ठीक है, तो simply to show the direction of the motion of this body. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दिस बॉडी तो ये डायरेक्शन में है. सो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आई एम शोइंग विद द ब्लू एरो मार्क, ऐसे. ठीक है, जब फोर्स डल रहा है तभी तो मोमेंटम हो रहा है एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहते हैं?
The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of force applied. ठीक है, तो ये चीज है. We are going to see the first of all the bodies as well as assigning the term for momentum of both the bodies कह लो या particles कह लो. ठीक है, तो the momentum of this body A, तो मैं ब्राउन कलर यहाँ पे यूज करूंगा simply to indicate the momentum of the body A, that is PA, as well as for the body B same color PB. So small p we are using and capital letters is only at the basis to show the reference bodies. ठीक है, चलो. So यहाँ पे terms explanation कर लेते हैं, लिख लेते हैं, right? Terms explanation. So you need to explain only two terms. Minimum two terms को explain करो with the diagram. So you will be having 1 marks for that. ठीक है, जो 5 marks का question होता है बच्चों, so whenever you are writing the statement, so it will be carrying 1 mark. ठीक है, जब statement रहेगा किसी भी 5 marks के question में, and another marks will be given for the diagram as well as terms explanation. Terms explanation आपके 2 होने चाहिए minimum, 2 से ज्यादा लिख सकते हो आप, but मेरा suggestion है you should write 3 instead of writing 2. If somewhere you go wrong with the second term explanation या first term explanation, एक करेक्ट है और एक गलत है, तो तीसरा अगर लिखोगे तो वो उसमें पैचअप हो जाएगा. ओके, सो PA is the momentum of particle A and PB is the momentum of particle B. ठीक है, so the momentum related with the body A is called as PA, उसको PA करके बुलाते हैं. The momentum of particle B which is related with the body B, तो उसको PB बोला जाएगा. ठीक है, since we are discussing about momentum, तो सिर्फ ये momentum तक ठीक है, but when there is a collision होने के बाद to this event particularly we are going to divide into two parts, means the terms before collision, the terms after collision. तो मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन के वक्त उसको कैसे रेफर किया जाएगा, एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हाउ इट विल बी गोइंग टू गेट रेफर्ड. तो ये चीज हमको ऑब्जर्व करना है. सो इनिशियली when before colliding two bodies we can say momentum of body A as PA, the momentum of body B as PB. Okay, then for the final momentum, so we can use as dash P to the base A. ठीक है, ये क्या है सर? So this is final momentum of body A, of particle A कह लो या body A कह लो, जो भी है. ठीक है, so what about this sir? Then this will be initial. PA क्या होता है? Initial momentum of PA, क्योंकि we are using the event in between these two bodies, particularly collision. तो collision के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? Two references ले रहे हैं for the momentum. One is initial one, another one is final one. Now P dash to the base B. Okay, so this is final momentum of particle B. ठीक है, so एक चीज हमको पता चल गया इससे, we are trying out to find out कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या नहीं. द मेन इवेंट फॉर द मोमेंटम क्या है? कोलिजन है. तो यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है नहीं. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? द अमाउंट ऑफ मोमेंटम गिवन टू द बॉडी, और एल्स बिफोर कोलिजन द अमाउंट ऑफ मोमेंटम इनसाइड द बॉडी जो रहेगा, क्या आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगा? अगर कंजर्वेशन टर्म यूज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग सेम, means there will be no loss of momentum. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा तो मोमेंटम भी रहेगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू बाइफरगेट दीज ऑल थिंग्स. तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता दिया. कोलिजन तो होने वाला है, तो बिफोर वाला इवेंट ले लेते हैं, आफ्टर वाला इवेंट ले लेते हैं.
तो उसी हिसाब से हम लोग क्या क्या बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक टू डायग्राम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रब दिस डायग्राम, द अर्लियर वन. ठीक है, तो पार्टिकल मैंने किस लिए बोला, किसी बॉडी को, ये चीज आपको बता दिया मैंने. एंड we came to know that there is an event called collision is taking place, where we are seeing the momentum initially as well as finally, and we are comparing both of the momentum, and we will come to the conclusion that as per derivation कि momentum conservation रहेगा. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ऐसे ही रहने दो. सो एवरी टाइम व्हेनेवर वी यूज टू सी दिस थिंग, we should know that कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं. ठीक है, so first of all I used to have this rectangular, यहाँ पे space बना लूंगा so that we can bifurcate the diagrams. Okay, so हमने दो columns बना लिए, right? So I'm making out the two surfaces. ठीक है, this is one surface and this is another surface. ठीक है, now I used to have the same sizes of balls. ठीक है, same sizes of balls. So these are two masses, body A और ये आपका body B. Fine. So we are keeping the gap in between. ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग गैप रख रहे हैं. So I'm showing the arrow mark of this body. Since body A एक ideal condition ले लेते हैं. Fine. What will be that? One is body A and the one will be body B. So body A will be in motion. तो ये motion में रहेगा. The type of motion will be momentum. ठीक है, इसका momentum रहेगा. And the body will be at a rest. ठीक है, चलो, तो momentum क्या बन गया इसका? तो momentum into this scenario is, मतलब momentum हो रहा है लेकिन यहाँ पे collision होने वाला है. collision होने वाला है. So I can use the term called before collision. ये वाला term को use कर लेते हैं. So the scenario will be before collision scenario. ठीक है, okay. Now the momentum of this body A will be PA and the momentum of this body body B will be PB. So both are initial momentum. ठीक है, now after collision वाला scenario consider करते हैं. Okay, so we can use these masses because we are using the same masses, same objects. The scenario will be different. यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे collision होने वाला है, right? So we are going to take the same masses, body A and body B. So there will be a collision in between two masses, right? देखो यहाँ पे, this will be the case. So this is after collision scenario. What will happen? So definitely you are going to show the motion of these two bodies. ठीक है, एक काम करते हैं. The red arrow mark I'm going to use with the body B, जो मैंने body A को दिखाया था in before collision scenario. ठीक है, so the green arrow mark, it will be shown that the momentum A को दे के वापस रिवर्स डायरेक्शन में जब बॉडी A घूमेगा, at that time the reverse direction is indicating with the green color. ठीक है, so this is A and this is B. ठीक है, now this momentum for the body A will be P dash A because this momentum will be after collision for the body A and this is for the body B. तो पहले जो body B before collision था, it was at rest. Now after collision both will be in motion. दोनों को momentum मिल जाएगा. एक का momentum reduce हो जाएगा, एक का momentum बढ़ जाएगा. Fine. But the overall momentums in both of the scenarios, it will remains same. मतलब क्या कह रहे हो सर? We are going to summing up the momentums before collision and after collision. So scenario क्या होने वाला है? PA और P to the base A plus P to the base B is equals to
p dash to the base a plus p dash to the base b. So we are going to get the conclusion with this equation. हमको equation ये मिलने वाला है. तो सर इसको कैसे लेके आना पड़ेगा? Okay, so first of all we worked on 2 marks. एक आपका statement, दूसरा diagram and then terms explanation. Diagram and terms explanation के लिए 1 mark और statement के लिए 1 mark. Now the third mark will be for the initial equations of the derivations. ठीक है, तो जो भी event घटता है उसके लिए हम initially 2 equations रहते हैं, either by doing operations or substitution. आगे हम बढ़ते हैं उस derivation में. ठीक है, okay. So you just remember this. ये चीज याद रखो, हमको यही लाना है. ठीक है, I'll rub this. So I'm going to bifurcate this place so that I can utilize this space. इतने में यूज कर लेते हैं पूरे डेरिवेशन को. ठीक, okay. Now listen up, my dear kids. So first of all, we all know that as per impulsive force, तो हमने impulse का concept देखा था. Impulse is nothing but impulse of the force. ठीक है, impulsive force is the small quantity of the larger quantity called impulse of the force. ठीक है, तो हमें impulse study करना है. And what we are seeing here in the short period of time, we are seeing that there is a impact of the force, that is impulse. तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? In the first scene we are seeing that after getting collision we are having the impulse. So we have impulse. Impulse is equals to change in momentum. We all know that. ये सारा चीज हमको पता है. Okay. Now, so change in momentum होता क्या है बेसिकली, बताओ मुझे. मोमेंटम में जब इनिशियली कोई मोमेंटम हो और उससे बढ़ के कोई मोमेंटम आता है, सो देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, बड़े या घटे जो भी है, इनिशियली बड़ा हुआ रह सकता है एंड फाइनली कम हो सकता है, या इनिशियली कम रहता है या फाइनली बड़ा हो सकता है, depending upon the scenario. Okay, so basically what we are going to write for the change in momentum, that is final momentum minus initial momentum. ठीक है, so in simple terms अगर हम symbols use करें instead of writing final momentum and initial momentum, so small p dash minus small p. So p dash stands for final momentum and small p stands for initial momentum. ठीक है, so we know that कि impulse is nothing but it is the product of average force and time. ठीक है, f avg into t factor, यही चीज होता है ना. so यहाँ पे अगर वेरिएशन हो रहा है, it is with respect to time हो रहा है. so we'll get the force की application of force कितना हो रहा है इसमें. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we are going to make one equation by seeing this equation f, the product of f average into t is equals to p dash minus p. We can make one equation. क्या equation बनेगा, f is equals to p dash minus p divided by t. So we can make this general equation. तो हमें force का जो expression है, we got that and we'll take this as equation number 1. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं. नाउ इफ आई, ये तो जनरल इक्वेशन बन गया फॉर द फोर्स एंड वी आर सीइंग द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेसिकली दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, है ना. तो एक काम करते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर प्रेजेंट इन टू सिनेरियोस, ठीक है, तो दोनों सिनेरियोस में हमको एक चीज दिखाई दे रही है, वन बिफोर कोलिजन एंड द वन आफ्टर कोलिजन. तो जब बिफोर कोलिजन जो होता है, you know, fa means the force from body A will be going to apply over the body B. So we'll get the fba factor. क्या मिलेगा हमें, we are going to
get according to न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वी विल बी हैविंग टू मासेस. हमारे पास दो मासेस है, एक आपका बॉडी ए और दूसरा आपका बॉडी बी. ठीक है, so this is A and this is B. So A is going to apply force over the body B. तो A जाके फोर्स अप्लाई करने वाला है बॉडी बी पे. So इसको कैसे इंप्लीकेट करते हैं हम लोग? We are going to write FBA. What it is? This is FBA. This is called as action force. ठीक है, okay. Now this is for before collision scenario. ठीक है, after collision scenario my dear kids, वो क्या होगा? When the collision will takes place between two masses, एक आपका body B और दूसरा आपका body A. Now after getting hit, so definitely it will be the body B will be going to react oppositely, है ना? तो यहां पे क्या होगा? F from body B, force from body B will be going to applicate over body B A, है ना? तो ये वाला जो क्वांटिटी रहेगा ना, FBA कितना रहेगा? F रहेगा. और FAB जो रहेगा ना, so this will be minus F. So the magnitude we are getting the same, but we are getting the reaction in the opposite direction. तो reaction force मिलेगा वो reverse order में मिलेगा. Okay, so whenever you are writing the FAB factor, it should be equals to minus FBA. बात समझ रहे हो? The magnitude will remain same. मतलब FBA is equals to F है, तो फिर FAB is equals to be F है, right? Only the matter of sign. ठीक है, क्योंकि oppositely reversely act कर रहा है. ठीक है, so we have two factors here. हमारे पास दो factors हैं. कौन सा वाला बताओ अभी? For every action there is equal and opposite reaction. ठीक है, FAB is equals to minus FBA. ठीक है, तो चलो टर्म्स बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट. ठीक है, FBA, FBA. तो FBA is equals to, हम इक्वेशन इसको कैसे बना सकते हैं? ठीक है, so we are going to write that P dash B minus PB divided by आप since change in momentum of the body B हो रहा है तो dt करके लिख लो. We can make it. ठीक है, so you can imply this equation with the FBA into dt factor. Okay, you cannot अगर dt यूज भी नहीं करते हो तो चलेगा, वरना एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा. We can take directly like this. FBA is equals to P dash B minus PB divided by dt. Take this as equation number 2. Okay, so for FAB we can write, क्या लिख सकते हैं? P dash A minus PA divided by dt. So take this as equation number 3. Okay, now according to Newton's third law we know this equation. क्या? According to Newton's third law we know this equation. हमें पता है, क्या पता है हमें? We know that कि FAB is equals to minus FBA. So we can substitute. Now substitute the values of FBA and FAB in the above equation. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं वैसे. So we can substitute here. यहाँ पे हम लोग substitute कर सकते हैं. Okay, I'm going to elaborate this in next page. Now listen. So हमने क्या लिखा था? ये इक्वेशन लिखा था FAB minus FBA. So you can substitute the values of these from equation 2 and equation 3. चलो. So this can be written as P dash A minus PA divided by dt.
is equals to minus into the whole bracket P dash B minus P to the base B divided by dt. Since we know that dt is common in LHS as well as RHS, ठीक है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया मैंने. So we can take P dash A minus PA is equals to minus of P dash B will be minus P dash B. So minus of minus will be plus. So plus PB. Now we can simply bifurcate. मतलब जो सेम नेचर के हैं हम एक तरफ ला सकते हैं. Like P dash minus P dash B we can shift on the left hand side, and minus PA we can shift it on the right hand side. So we'll get one thing. P dash A plus P dash B is equals to PA plus PB. Okay. So we got the, क्या मिला हमें? One second. Okay, we got the final equation. क्या मिला हमें? So the momentum, the total momentum on the left hand side, the total momentum of two bodies after collision, है ना, on the left hand side is equals to total momentum of two bodies before collision. So we are trying to conclude this concept. हम यही concept को conclude करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है. So यहाँ पे मैंने लिखवाया था. So is this clear, my dear kids? Any doubts regarding this? You can make quick response so we can move to the next concept. Quick. Okay, Parijan, no doubt, sir. Fine. It's clear. Vaishnavi Mat. Okay. Bhimanna Chalwadi. It's okay, sir. Santosh C. Hiremat. No doubt, sir. Fine. Clear. Okay. No doubt, sir. Rakshita Kamble. Rakesh Ayholi. Clear, sir. Okay. So fine. This is it. ये इतना ही है. So we'll move further to the next concept. Vaibhavi Pawar. Okay. Good. Understood. Fine. Thank you. So we'll be having only क्योंकि मैंने ये पहले ही आपको बता दिया कि कंक्लूजन यही आने वाला है, तो आपको मिल गया, कंक्लूजन यही आ गया. सो इसका अल्टरनेट मेथड भी है, तो वो थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं. दैट इज वेरी मच इजी. सो इट वाज फॉर द स्टेट सिलेबस, राइट. अभी जो हमें प्रेजेंटली दिया गया है एज पर एनसीईआरटी, सो इट इज दिस, राइट. अल्टरनेट मेथड का हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि एक तो आ गया हमें कंसेप्ट, ठीक है. while having the derivation you just make me remember that कि सर alternate method आपने बोला था, बस 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा वैसे, no need. now एक कंसेप्ट आता है recoiling of a gun. what it means, इसका मतलब क्या होता है recoil करना, ये क्या होता है बताओ मुझे फट से. recoiling of a gun. So why I'm using this example? Why I'm using this example? Because this is the application part. यहाँ पे application part आएगा of law of conservation of linear momentum. ठीक है, तो इसका application part आपको कहाँ पे मिलेगा? recoiling of gun में मिलेगा. तो हमने law of conservation of linear momentum तो देख लिया. Okay, we saw this and we are using and we are seeing the application part of the gun. ठीक है. Okay, so basically recoiling होता क्या है? I'll make a rough diagram of the gun. ठीक है, यहाँ पे हम गन का एक रफ डायग्राम डाल लेते हैं so that
आपको मैं बता पाऊंगा प्रॉपरली। Okay, so here is the bullet. So this is your gun, है ना, ये आपका बुलेट है, ठीक है। So it will be carrying small m as well as it will be having velocity v, and जो गन का मास रहेगा उसको कैपिटल m करके ले लेंगे, फाइन। So the velocity of the gun will be given with कैपिटल v ले लेंगे, so that छोटा वाला मास को छोटा वाला वेलोसिटी एंड बड़ा वाला मास को बड़ा वाला वेलोसिटी सिंबल दे देंगे, राइट। सो दिस इज योर गन, डायग्राम आई हैव मेड, थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, ओके फाइन, ओके नाउ ठीक है। तो whenever a bullet is fired from a gun, whenever a bullet is fired from a gun, ठीक है, तो जैसे बुलेट आगे जाता है उसका जो मैगजीन है ना, उसका मैगजीन नहीं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो रिकॉइल करता है, वापस आके फिर से उसी जो पोजीशन है उसी पे सेट हो जाता है, उसको कहते हैं हम रिकॉइलिंग, ठीक है, ओके। सो देन गन recoils. So this link will be going to cut within a minute, my dear kids, probably 30 seconds. So be ready to reconnect with the same link. मैं आपको link भेजूंगा. Moves. Okay, my dear kids, when a bullet is fired from a gun, okay, then bullet moves in forward direction, ठीक है, bullet moves in forward direction and gun moves in backward direction about its body m, ठीक है। तो गन जो है वो क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन लेता है अबाउट इट्स बॉडी m, मींस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन बॉडी, ओके। सो if I show the direction, if I show the direction of the bullet, so it will be like this and gun will be having the direction like this, ठीक है। So backward moving is called as recoiling. तो जो backward moving रहता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, it will be called as recoiling, okay। Now what we are seeing sir here, you know my dear kids, we can applicate the principle of conservation of linear momentum, we can make practical application with the recoiling of a gun concept, ठीक है। कैसे बताता हूं मैं आपको, since the velocity of a bullet, okay, initially before bullet is fired it will be zero, ठीक है, and the velocity of the gun, so before firing a bullet is also zero. So initial momentum of the gun कह लो या bullet कह लो, it will be zero, क्योंकि दोनों की velocity zero होती है, ठीक है ना। तो अगर दोनों की velocity zero होती है सर, तो हम इसको क्या कहें, क्या हम इसको बोलें कि दिस इज p डैश, ठीक है, स्मॉल p डैश कह लो आप, यू कैन कॉल दिस एज स्मॉल p डैश, ओके।
स्मॉल पी डैश कहने से बेहतर है कैपिटल पी डैश, बिकॉज वी आर यूजिंग कैपिटल टर्म्स हियर, तो कैपिटल पी डैश कह लूंगा मैं इसको, फाइन. And this has small p dash. Okay, this will be having small letters of mass as well as velocity. So both will be equals to क्या है, जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है. ठीक है. और else you can simply use it as, आप अगर दोनों टर्म्स को स्मॉल ही लेते हो, दोनों टर्म्स को स्मॉल लेते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यू कैन यूज कैपिटल टर्म्स mv यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल टर्म्स mv, ऐसे ले सकते हो. सिंस बोथ आर शोइंग दैट कि नहीं, डैश नहीं ले सकते यहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डैश यू कैन यूज सिंपल ऐसे, थोड़ा बाइफरकेट इजी हो जाएगा सिंस बोथ आर इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, चलो. सो वी कैन कॉल दिस एज इनिशियल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज क्या है, व्हाट इट विल बी, वो है आपका स्मॉल p कैपिटल mv टू द बेस स्मॉल p टू द बेस स्मॉल mv. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, मैंने फाइनल को पहले कंसीडर करना सोचा था, फिर मुझे लगा सिंस द बुलेट हैज नॉट फायर्ड तो इनिशियल मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इट विल बी इक्वल्स टू जीरो. चलो ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू जीरो. ये तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. नाउ द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, मतलब गन एज वेल एज बुलेट, जैसे बुलेट को फायर करते हैं इनटू दिस सिनेरियो, वी कैन कॉल दिस एज मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर फायरिंग द बुलेट. बिफोर फायरिंग द बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, तो दोनों का मोमेंटम भी जीरो था. तो अभी यहाँ पे डैश को यूज करते हैं, दैट विल बी बेस्ट. ठीक है. सो पी डैश कैपिटल एम कैपिटल वी. ठीक है, प्लस पी डैश स्मॉल एम वी. ओके, सो ये कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और ये कैसा मोमेंटम है, p डैश टू द बेस टोटल, बट आफ्टर फायरिंग बुलेट. ठीक है ना, ये ऐसे लिखते हैं. सो वी कैन टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सो यू कैन टेक फॉर दिस वन, इसको क्या लिख सकते हो, मोमेंटम ऑफ गन एंड फायर बिफोर फायरिंग अ बुलेट, बिफोर फायरिंग, है ना, तो इसको बिफोर फायरिंग करके ले सकते हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे थोड़ा सा छोटा लिख लिया वैसे मैंने. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट व्हेन यू आर एप्लीकेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यू आर गोइंग टू राइट कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट is equals to momentum, total momentum, है ना. So momentum, total momentum, ये भी टोटल ही है वैसे, आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो टोटल, फिर आपको कुछ अलग नहीं लगना चाहिए. टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट, दिस इज ऑल्सो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट. दिस इज राइट, क्योंकि टू द बेस लिखा है, बस इतना लिखा है. सो दिस इज व्हाट p is equals to p dash क्या है, this is nothing but this is your conservation of momentum. इसी को हम क्या कहते हैं, conservation of momentum का application हो रहा है. Is this clear my dear kids? हमने applicate कर दिया. Now sir, अभी यहाँ पे p total क्या है before firing bullet, so it will be equals to zero है, it will be equals to zero है. What about this sir, p dash after firing bullet, so you will get this one, आपको ये मिलेगा. ठीक है, तो ये मिलेगा तो आप लिखोगे क्या, p डैश कैपिटल M कैपिटल V प्लस p डैश स्मॉल m स्मॉल v. ठीक है. नाउ व्हाट यू गोइंग टू राइट हियर, यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल M एंड कैपिटल V. ठीक है, एंड हियर यू विल गेट द स्मॉल m स्मॉल v इज इक्वल्स टू जीरो. सर व्हाई वी आर डिराइविंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम क्यों डिराइव कर रहे हैं, हमको क्या जरूरत है सर. यू नो माय डियर किड,
dear kids, we are using this one to use this formula into numericals, especially बुलेट फायरिंग वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना, वहां पे ये बहुत यूज होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे दो बॉडीज हो, जिसके दो वेलोसिटीज बनते हो, दो मोमेंटम बनते हो, इट विल बी कैरिंग टू मासेस. सो टू गेट वन अननोन क्वांटिटी हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं. सो बेसिकली इनटू दिस वी आर फाइंडिंग आउट द मेन अननोन क्वांटिटी, जो जनरली ये जब फॉर्मूला यूज होता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज. वैसे मास तो आराम से आप वैसे भी फाइंड कर लोगे, but in general we used to find velocities either related to second body or first body or heavier body or smaller body. यही है. We can use this formula in this way. हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको. This small mv can be shifted here ऐसे. Okay, capital M and capital V. Okay, so what this implicates? This implicates that capital V is equals to minus small m v divided by capital M. What this minus sign indicates for? So we were talking about what? We were talking about recoiling, है ना? हम किसके बारे में बात कर रहे थे? Recoiling of the gun के बारे में बात कर रहे थे. तो किसी भी गन का recoiling velocity आपको find करना है. So you can use this formula. Is this clear, my dear kids? What we are finding out here? हम लोग क्या find करना चाहते हैं? क्या ये चीज clear हो गया? So we will be having numericals here. Yes, good. Parijain, Vaishnavi Mat, Rakesh Ayholli. Good. So the next concept for tomorrow, आपको कल जो concept रहेगा वो क्या रहेगा? Okay, Santosh, very good. While firing, मतलब जब भी आप बुलेट को फायर करते हो तब क्या करना चाहिए हमें? ठीक है. The gun must held. The gun must held to the shoulder. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज गिवन एज होमवर्क. आपको मैं ये होमवर्क के लिए दूंगा, बट दिस इज ऑल थ्योरेटिकल. ओके, थ्योरेटिकल परसेप्शन होगा इसका. Within 2 to 3 lines you can write the answer of this question. If you're not able to explain this tomorrow, definitely in the next class, in the lecture number 6, I'm going to explain regarding this. This is all related to Newton's third law, बस और कुछ नहीं. तो क्वेश्चन क्या है? While firing the bullet, the gun must held to the shoulder. Okay, this is your homework. The class is over. If you have any doubts, you can ask me. Okay, I'll stop the recording. So before stopping the recording, I request everyone, tell about my channel to your other college friends. Okay, so it will be helpful to them. So we'll see. Okay, thank you. Okay, thank you, Rakshita, Aishwarya and Saundarya. Thank you. So my dear kids, we'll meet tomorrow at the same time. So this is Chetan sir at the Physics Indian Professor YouTube channel. Go at my comment box. You can give feedback as per your convenience. Okay. Till tomorrow. See you. Bye bye. Jai Hind.